I'm Dr. Zia Ur Rehman. Today, one of our MA student, Zia Ur Rehman, is presenting his research thesis. I myself, Dr. Zia Ur Rehman, is the supervisor, and his research topic is automated detection of incorrect psychotherapy exercises by the stroke patient using convolution neural networks. His external examiner is Dr. Tamliq Ali Tanveer, and internal examiner is Dr. Fahad Masood. So I'm requesting to let him start the presentation. Thank you. Assalamu alaikum. My name is Zia Ur Rehman. I am student of MS Computer Science. This research work is supervised by Dr. Zia Ur Rehman. The research work is supervised by Dr. Zia Ur Rehman. This research work is supervised by Dr. Zia Ur Rehman. My research topic is automated detection of incorrect physiotherapy exercises by the stroke patients using convolutional neural network. Before going to introduction and agenda, I would like to say that I have published a research paper, Automated Detection of Rehabilitation Exercise by Stroke Patient using 3-layer CNN LSTM model and Hindawi Journal of Healthcare Engineering, which is a category W journal and having an impact factor of 2.83 and is available online. Okay, sir. The agenda of my work is, first of all, I would like to explain introduction, then I will go through literature review, then problem statement, research question, objectives, results and discussion, and at the end will conclude the work. Introduction. According to statistics, stroke is the second or third leading cause of death and adult disability. The stroke causes because of when blood supply stops to brain due to any reason, either when heart starts supply to brain or due to malfunctions of blood vessels. Which causes this stroke causes cerebral palsy, which affects motor function, trauma and paralytic injury, post-traumatic stiffness, and Guillain-Barré syndrome. These are different type of diseases which is causes because of stroke. The stroke causes losing control of the motor function, incoordination or paralysis of all body parts, post-traumatic stiffness, and Guillain-Barré syndrome. Due to these type of diseases, which is the patient which is losing control of the motor function and having back pain in all body parts, they are having gait disorder and paralysis of different body parts, which is causing damages of hip flexors like elbow joints, knee joints, ankle joints, and different type of joints. They cannot move properly. The movement is disrupted. So for this reason, the survivor of a stroke, which have the above conditions which I discussed above, so they must relearn the loose skills which they have lost due to stroke. For this reason, the physiotherapist employs different type of physiotherapy exercises. Different type of physiotherapy exercises like nerve re-education, task training, and muscle strengthening, which needs different type of exercise like extension and flexion of knee joint, extension and flexion of elbow joint, and extension of flexion of all body parts. Also, it causes the physiotherapist will employ abduction, adduction, dorsiflexion, plantar flexion, pronation, supination, these are different type of exercises which the rehabilitation personnel is applied.
So this was a little bit introduction about my research topic. For this reason, the which I am working over the rehabilitation of physiotherapy exercises. This rehabilitation of physiotherapy exercise, which is a sophisticated and complex area of human activity recognition. In the existing literature, the human activity recognition is mostly, they are forming it using giant angles. They are calculating giant angles, and the giant angle is obtained through RGB depth sensors or kinetic sensors. In my base paper, they applied HWT Haar wavelet transform. They is applied to preserve the information before the features extraction, features extraction and reducing the dimension of the data. Then for the final picture extraction, they apply a thresholding method with inverse Haar wavelet transform for the final features from the input data. At the end, they apply KNN, which is a machine learning classifier, is applied to recognize the activity, to recognize the human activity, what type of activity he is performing, and achieved an accuracy of 86.1%. Here I have given some papers from the literature, in the existing literature, that how they are classifying human activities and which techniques they are used and what are their future works. For example, in the first paper, which is hierarchical human activity recognition, which is using kinetic skeleton data. They are using biological based hierarchical recognition model and through kinetic skeleton data, and at the end applying SVM and HMM support vector machine and hidden Markov models are applied for the recognition of the exercise. Their future work is that they will introduce deep learning models, deep learning and machine learning concept, and instead of this handcrafted feature extraction techniques. This is their future work. The other one is HR, human activity recognition through skeleton data using support vector machine. Here also they are using SVM. SVM is taking data from the kinetic sensor. Actually, the kinetic sensor, which is accumulating the data, this data is applied to SVM support vector machine, and then SVM is classifying the activity, which activity, and their algorithm shows that at a distance of 2 meters from the body and the kinetic sensor, it has given best results. Their future work is that they will test the model on more complex activities in the future, because now they have done on simple activities. They have tested the model on simple like standing, sitting, and this type of activities they have tested the models. This one is my best paper, HR, human activity recognition with analysis of angles between skeleton joints using RGB depth sensors. They have obtained data from the skeleton joint through skeleton joint angles, which is obtained through kinetic sensors. The depth data is obtained through kinetic sensor, and at the end, for the recognition of the exercise, K-nearest neighbor algorithm is applied and has achieved its 6.1% accuracy. Their future work is that they says that we will evaluate the model, we will test the model, instead of accumulating data through kinetic sensor, we will use a simple RGB camera to explore the domain of to broaden the domain of this learning ability. Because most of the existing literature, they are using just kinetic sensor or depth cameras. So they say that we will use a simple RGB camera. And at the in other paper, also the same thing is obtained through abnormal gait disorder through the lower limb. They have achieved that 89.5% accuracy. Here also dynamic time warping algorithm and KNN is applied. And this says that in the future we will accumulate real-time data and they will deploy folk server in the medical centers to achieve real-time data from the physiotherapist or when the patient is performing just kind of exercises. So here, my research work that I am taking action against on their future workshop. I will use a simple RGB camera instead of a kinetic sensor or depth sensor. I will take. Why you wish to use these? Okay. Then, so here the problem statement is that stroke patients which have absolute necessity and physical exercises. For their rehabilitation exercises to recover from this disease.
Traditionally now there are using two vast techniques are used, which is one is artificially and the other is robot assisted technique is there. But due to the shortage of healthcare providers, and due to the maintenance, due to the cost of intelligent robots and its supplementary maintenance, and due to the shortage of healthcare providers, both of these methods are not suitable because the rehabilitation of stroke related problem, it is a long lasting process. It is taking 2 years, 3 years, 4 years, maybe it is taking up to 10 years, and the person is need this type of exercises. If they daily visits the healthcare providers, the doctors or the physiotherapists, it's not feasible. Yes, sir, the kinetic sensor, these are just RGB depth sensor, which they have applied at a certain place. These are static sensor, not mobile. And when the human is performing some exercises or rehabilitation exercises, for example, here we put the kinetic sensor, they will acquire data from that place. Like they will take from the skeleton charge. For example, I am here, they will scan my body like X-rays, and they will take these angles. On the base of this, for example, this is the angle, so it will take this angle. Coordinate of the kinetic sensor is actually taking, that will take the coordinate of this point, coordinate of this point, and coordinate of this point. Then on this base, they will calculate this angle. So they collect data in form of X-rays. X-rays are used to sir, I just give you example of X-ray, not just it gives the skeleton data. For example, it is taking the skeleton. this is an RGB type. RGBD type, yes sir, So RGB. what is the difference between RGB camera and kinetic sensor? Sir, I Base paper contains RGB camera. RGB camera, yes, sir. You can use kinetic sensor. Both are in RGB data collectors. Yes, sir, both are RGB, but the one is taking skeleton data. RGB depth sensor, this is taking skeleton data. So you know, a human skeleton, which is like X-rays. And on the base of these skeletons, these are taken information. And which I am just using pictures. Human pictures, I will use it. X-ray detect bones. You are coding X-rays. Sir, this RGB depth sensor is not a type of X-ray. What's the difference between RGB and RGB? Yes, sir. Yes, okay, I got the What point. is that? Yes, yes. RGB is simple, sir. You know, when we are taking image through our simple camera, this is RGB image, which is. Okay, sir. ठीक है sir. Sir, RGB image is simple, colors image, just which we are taking through simple camera. The RGBD image, they are taking in depth knowledge. When we convert it, this is the depth image of that body, which is taking the skeletons of that body, not simply it is taking a simple image. This is depth image of the skeleton of the internal. Define this as an RGB camera takes picture in 2D, while an RGB camera In 3D. Yes, sir. But RGBD is taking the pictures in 3 dimension. Sir, what next? Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. I am not using RGBD. I will use simple RGB camera. You are saying that when someone has a stroke, we cannot move his head or neck or whichever part, but you want the camera to tell him that he is doing the exercise wrong, and you want to remove the physical therapist as well. Yes, sir. If he cannot move his head, how will he perform the exercise? Sir, actually, what I am saying, I am not saying like that he is completely paralyzed. If he is not doing anything, then he is not completely paralyzed. If he is facing difficulties, just like I give the examples, it is due to cerebral paralysis or Guillain-Barré syndrome or autism spectrum disorder or gait disorders. If you look at this, this is not completely a paralyzed person. This is, for example, a simple gait disorder. If you get disorder, the gait disorder is that the person which is taking steps, there is some abnormalities in that. Maybe you have seen here some persons, they are taking the steps abnormally. Just not completely paralyzed person. A person, I am taking the example of those person which is just which have Guillain-Barré syndrome
or autism spectrum disorder or the other one, which they are able to move, but not properly to their same position. They are not completely taking the same activities. Okay, sir. So the other one is kinect sensor as used in the existing literature. Kinect sensors, which is which is an alternate name of RGB dip sensor. These are the same name. Kinect sensor is used to obtain data from the skeleton joints, where its angle information detect incorrect angles due to the viewpoint variation and deformation. This is the main problem. Due to deformation and viewpoint variation, when we are taking the angles, for example, when I am standing here and I take the kinect sensor as taking image from here, it will calculate this angle a different type of angles. But I change my position, then this kinect sensor will detect another type of angle, which is because of a viewpoint. So then the machine will not understand properly, and there will be problem. But sir, if the angle changes, then they will not understand the angle. Angle is changing. So the angle has nothing to do with the dimension. Sir, angle matter करता है sir, angle. असल में angle जो है ये angle matter करता है. For example, अगर उसने ये किया कि ये angle जो है ये 45 है, तो ठीक है उसने तो 3D में किया, लेकिन मैं इधर को इस तरह करता हूँ तो ये angle change हो जाएगा. तो फिर kinect sensor के थ्रू हम वो particular exercise जो है वो डिफाइन नहीं कर सकते. Yes, sir. Yes, sir. I am coming to that point. Sir, actually, what I am doing, I am taking the pictures through RGB camera through different angles. For example, I will take 4 or 5 pictures for that part. For example, I am now standing in front of you. I will take picture from that one side. Then I will take some like pictures. Then I will take frontal images also and sidewise images also, and also in the intermediate angles. Two cameras, through 2 cameras we will take data, sidewise and front side data. Yes, sir. So by repeating these 2 images from this, he is calculating the frontal angle and the side angle. And then he is combining both to avoid and to overcome the issue related to the RGBD, whatever was needed. If I am not wrong. Yes, sir. Exactly, sir. Yes, sir. सर डेप्थ से फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको देख रहा हूँ सर, तो एक तो एक्स वाई प्लेन होता है, ठीक है, और डेप्थ जो इसके फॉर एग्जांपल इसका जो सर डेप्थ हो इसका इंटरनल फॉर एग्जांपल इसकी वेट जो है, एक होता है डेप्थ, एक वेट होता है, एक हाइट होता है, जो इसका वेट हमें देगा, वेट डेप्थ. फॉर एग्जांपल जिस तरह हम किसी इमेज को देखते हैं दूर से सर, तो वो हमें छोटा नज़र आता है, लेकिन जैसे हम उसके नज़दीक आते हैं तो इमेज बड़ा हो जाता है, फिर उसके हमें उसकी डेप्थ नज़र आ जाती है. यस सर, यस सर.
इसको WP का एक्सटेंडेड किया हुआ The research question is how to design an automated model that can guide stroke patients to perform rehabilitation exercises without human intervention in order to detect and identify exercise. Sorry, sir. Yes, sir. The objective of the research work is, sir, then I designed a 3-layer CNN LSTM model for this purpose. One, I am using a simple RGB camera. I will collect the data through simple camera, and then You have done the research now. yes, sir. So remove the word when. Yes, sir. You understand what am I saying? Yes, sir. When the 3-layer CNN LSTM model does not require human supervision and verify the physiotherapy exercise during rehabilitation. When this one, the other one is to derive useful features by CNN, then it is provided to LSTM, increasing the accuracy of the recognized exercises. The third one, to create the data set, we have created our own data set under the direction of physiotherapist, which is performing rehabilitation exercises. In order to achieve a robust system, a comparison is made between a unimodal and multimodal approach. Okay, sir. Now I am going towards research methodology. First of all, I recorded the data from the rehabilitation exercises through RGB camera. Through simple camera. Then we resized the image to a dimension of 256 by 256 image, which is resized to that dimension with depth 1. Means we resize it to a grayscale image. First we taken the data through RGB camera, but then we resize it to 256 by 256 image to reduce complexity and grayscale image and convert it to a grayscale image. Then we apply on this data, which we resize above through convolution neural network. First we apply convolution operation, which is a sum of product operation on the input image and a filter, which we use a 5+5 filter for the extraction of correct and useful features. As you know that convolution Z, sir, it is the input image, which I have converted to 256 by 256 matrix. This is the input matrix data. And F is a filter. In convolution, we are mainly we are just convolving the input data with a filter for the extraction of correct features.
So F is a filter which I have taken a 5+5 filter. Then, as we know that convolution is a linear operation. Convolution works over the linear data. So, and we know, the data we have taken, the data in real time data under the direction of physiotherapist, which is non-linear. So to deal the convolution with non-linear data, we apply a Rayleigh actuation function over this to convert linear data to non-linear data. Why there is need of convolution? Why we are converting matrix to the filter? Sir, convolution, when we are convolving data, it is a sum of product operation. For example, when we convert the image to 256 by 256 pixels, right, sir? Then we have taken a filter of 5 by 5. Then we are convolving every filter with the image. Just you see, when we are convolving the image, it is sum of product operation. First pixel value to the first pixel value of the filter and the image. Then the second value, then third value, fourth, and at the end we add it. So for the extraction of useful information, which one data we needed, and to remove the non-useful values. For example, to remove negative values, zeros, nulls, etc. For this purpose, we are convolving the image. What do you mean by depth of one? Sir, I explained it before. Depth of 1 means it is a grayscale, and we converted it to a grayscale image. Grayscale image has already depth 1. Zeros are 1. 0 pass black and yes, sir, black and white. Yes, sir, black and white image. Yes, sir. Sorry. Depth 1 means it will be a black and white image. If depth become 3, then it will be an RGB image. Then we applied Rayleigh actuation function for the reason to produce non-linearity in the model, because convolution is a linear operation. Convolution is doing linear operation. For that purpose, we apply Rayleigh actuation function. You have taken images to RGB camera. Yes, sir. RGB कैमरा के थ्रू दिए सर, लेकिन फिर उसको कम्प्लेक्सिटी कम करने के लिए हमें ज़रूरत नहीं, कलर का हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं है इस रिसर्च में. हम तो सिंपल कैमरा के थ्रू करेंगे ना, सिंपल कैमरा के थ्रू. Yes, sir. Depth 1, sir. Depth 1 होता तो black and white ones. 0 to 2, its intensity value will be 0 to 255. जी सर. RGB इमेज को किस प्रोसेस के थ्रू आपने ब्लैक एंड व्हाइट बनाया? वो फंक्शन नाम बता दें, कौन सा फंक्शन? सर मैं तो सिंपल है वो, मैं पाइथन कमांड थ्रू RGB टू ग्रे. सर ये एक कमांड है. फिर इसके कन्वोल्यूशन 2D इमेज जो इमेज है ना सर, वही है, उसको सिंपल ग्रे, उसके आगे ग्रे डबल कोट्स में लिखे तो वो ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर देता है. और मैंने फिर उसी ग्रे स्केल इमेज को, सर मुझे मैं क्वेश्चन नहीं समझा. टेक्निक ये ये आपने RGB को ग्रे में कन्वर्ट किया ना. जी सर. तो ये जो आपने फंक्शन RGB टू ग्रे, ये फंक्शन कैसे वर्क करता है? अच्छा सर, जो इसके ये इंटेंसिटी एक तो इसका डेप्थ जो है वो 3 होता है. जो इसकी इंटेंसिटी वैल्यूज होती है, RGB की इंटेंसिटी जो है वो 3 है ना, मतलब रेड ग्रीन ब्लू. मैंने उसको सिंपल ग्रे में कन्वर्ट किया, उसकी इंटेंसिटी 1 हो गई, पिक्सल वैल्यू इसकी 0 to 255 किया बस. बाकी मुझे पता नहीं कि इंटरनली कैसा होता है. इंटरनली तो यही टेक्निक. यस सर. यस सर, रिसाइज. यस सर. नहीं सर, रिसाइज किया इमेज, सिर्फ रिसाइज किया पूरा एक लूप के थ्रू पूरी इमेजेस को रिसाइज की हुई है. 256.256 सर मैं क्लिप कमांड्स के थ्रू. आप समझे
Yes, sir. वो ये कहते हैं आपने 256 किया है, Yes, sir. तो आपने इमेज की क्रॉपिंग की है या इमेज के साइज को रिड्यूस किया है? मैंने इमेज की सर क्राफ्टिंग नहीं किया, मैंने फंक्शन यूज़ किया सर, थ्रू कमांड्स किया, नहीं मैंने कोई क्राफ्टिंग नहीं किया सर क्राफ्टिंग मैंने नहीं किया सर. Then after the ReLU actuation function, as we know that deep learning is extracting too many million of features, which is very complex process. For that purpose, in the first layer we applied max pooling layer, simple pooling layer, to reduce the complexity of the model. For example, if we have extracted 1 million features, then it will reduce the number of features, provided that it will not lost the useful information. Convolution will do this through max pooling layer. There are many types of pooling layer, like sum pooling, average pooling, but I have used, and most of the researcher is using, which is giving useful result. Max pooling is giving the useful results. Then after useful layer, to resolve overfitting issues, dropout layer is applied. The overfitting issue is that we have seen that during training the model is giving a high efficiency, high accuracies the model is giving. But when we during in the testing phase or in validation phase, the model accuracy is decreases, this problem is because of overfitting issues. So to reduce this issue, I have applied dropout layer to reduce the overfitting problem. After dropout layer, then now we have extracted the correct features. So the next phase is to flatten this data, which is a pool feature map of some dimensions, which is a pool feature map of 2-dimension images till now. It is a 2-dimensional matrix. We have to convert it into 1 dimension, just a long vector of 1D, and pass this data sequentially to LSTM layer. We using LSTM, so further we will provide this data to LSTM layer. Then for classification, this function convolution is using this function, which I will explain this function in the after 2 slides. If I explain it here, maybe it will something due to the model trend, I will explain this one. So this is the architecture of our model, architecture of our 3-layer CNN LSTM model. At first, this is the input image. Then we process that data to 256 by 256, and then we applied 3-layer convolution. We applied 3-layer, and on every layer we applied convolution operation, ReLU actuation function, max pooling, and dropout. And these 3 layers, on every layer, the values of hyperparameters, I have changed the values of hyperparameters according to their need. Which parameter is giving best result, I have selected that one in the start layer, and so on in the second and third layer. Then these values is given to LSTM layer. I have inserted here LSTM layer, use LSTM layer because the convolution operation, it is a memoryless algorithm. Convolution is a straightforward feed-forward algorithm. It is not having memory. So I have used here RNN algorithm, LSTM, which is a RNN algorithm, and it is having memory. LSTM is remembering the fast information. It's having memory cells, due to which I introduced that one, pass this data sequentially through LSTM, and then forward the data to fully connected layer for training purposes. After Yes, sir. LSTM, it is working best on time series data, temporal data, and CNN, it is working best on spatial data, which is related to space, like images, videos, and these. So in the start, as we are giving image, then we decided, so in the start we are using CNN to extract useful features. Then to remember these features which we have extracted before, just to remember that one data, after that we are using LSTM. And LSTM also we are passing sequential data, which is time series data, to LSTM, and LSTM working best for this temporal data. Due to which first I am using CNN,
than using LSTM. If I use RNN first and then CNN, then maybe they will not, RNN is not working properly, not working best for spatial data. RNN is just working good for temporal data, due to which I using CNN first. What is actually then after the LSTM, what is the screen connected layer? Okay, sir. Sir, actually, now when we came to the phase of fully connected layer, actually the whole training is performed in fully connected layer. A fully connected layer is using this one concept, this one. F of I is equal to 1 up to n summation W of I into Zi plus B. And fully connected layer, we are multiplying weights with each neuron, with each node. In the start, the algorithm is multiplying random nodes to that. Then, after in the output layer, which is the last layer, they are calculating the loss. So for example, we have some data. We have taken some data on the one side and the other on the next. Then we calculate what is the ground truth value or actual value, and what is predicted value. We calculate the difference between the ground truth value and predicted value. For example, we obtain some loss. Then this algorithm back propagate the gradients, the parameters, and again training is performed. Due to which, and again new weights will multiply with this one. So that one, the model will reduce the loss and will increase the accuracy. This is the concept of CNN, that we are multiplying weights like the equation applying y is equal to mx plus c. So we are multiplying the weights, are parameters, some random values to reduce the loss. Due to that reason, we are applying fully connected layers. And after that, we are applying batch normalization. As the deep learning algorithms is doing too much computation, there is one problem which is called the problem of internal covariate shift. For example, I am not considering color, but just I am giving you an example. For example, if you train a model on red apples or green apples, the model will not work best on yellow apples. This is the problem of internal covariate shift. So to deal with this problem, to solve the problem of this problem, we are using batch normalization for this problem. And also, when we are applying batch normalization in a model, the model is fastly learning the data. It increases the speed of the model during the weight learning phase. After that, we apply batch normalization. Then, at the batch normalization layer, we will obtain a real values, which is from 0 to onward any number of value. We apply softmax function so to downsample the values between 0 and 1 to give the results as and probabilities. And at the softmax. Sorry, sir? I mean, the positions that this is what Sir, yes, sir. Sir, actually, I am using this. This is the case that I told before that in the traditional techniques they are using KNN, which is my base paper. KNN is a machine learning algorithm which depends on human domain knowledge. For example, which images we have given to them, they will just understand their own. But the deep learning algorithm, it works like human brain. The human brain. So CNN has no need of that one. The different type of images which we have given to CNN, they already understand it. So here. साथ मैच नहीं करता तो उसको कह देगा कि ये आपकी एक करेक्ट एक्सरसाइज तो दो एंगल्स का इशू है इसमें वो एंगल कंपैरिजन इसने डिसाइड किया यस सर कंपैरिजन की सर डिफरेंट रैंडम इमेजेस में यहाँ पर डेटा सेट बनाया है यस सर तो वो किस टाइप की एक्सरसाइज के लिए आपने बनाया था सर उसको फोकस करेगा यस सर वो तो सर थीसिस में है वो तो पाई हाँ सर इमेजेस टोटल इमेजेस जो थे मैं 2250 इमेजेस मैंने टोटल ली थी
फिर उसको उसमें एक्स वाई नहीं सर एक्स वाई इसमें नहीं थे, बस रैंडम इमेजेस मैंने लिए थे, रैंडम पर्टिकुलर एक्सरसाइज के लिए। फॉर एग्जांपल एक एक्सरसाइज है, उसके लिए जो एक्सरसाइज देनी पड़ती है उसी एक्सरसाइज के मुताबिक रैंडम इमेजेस मैंने दिए। आपने रैंडमली डिफरेंट एंगल से इमेजेस लिए और हाँ बिल्कुल यस सर। तो यस सर, तो CNN के लिए सर फिर ये CNN जो है वो पिक्चर्स तो ऑटोमेटिकली लर्न करता है सर। CNN के लिए फिर ये चीज़ कोई मसला नहीं करता, उसको आप एक टाइप की इमेज दे दे वो दूसरी टाइप में ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है सर। सर मैंने इमेजेस यूज़ किया सर। ये फ्यूचर वर्क भी मैंने फ्यूचर वर्क में किया है कि फ्यूचर में सर मैंने सिर्फ एक किशोर जो भी आप सीख किया। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला तस्वीर सीख किया हुआ, ठीक है। ये मतलब स्ट्रेट हो गया, मैंने सिर्फ करेक्ट इमेज दिया सर। ये इंटरमीडिएट जो आप सर मैंने इन रिजल्ट दिए हैं किशोर, मैंने बस ये बस बाकी मैंने नहीं दिया। यस सर फ्यूचर वर्क में यस सर। यस सर बाविद इनपुट तो सर CNN तो जो मैंने बताया कि 256 बाई 256 इमेज हो गया, तो यही उसका इनपुट हो गया ना, वही इनपुट मैंने दिया, उसको फिर कन्वाल किया सर। तो इमेजेस जब आ गए तो कैमरे की बात खत्म हुई, जब हमारे साथ कैमरे इमेजेस के हाथ में सर कैमरे जो ये सर तो तस्वीरें हमारे साथ आ गई, डेटा सेट तो हो गया, तो फिर वही बात यस यस सारे के सारे इमेज 256 पर सर उधर मेरे सर मैंने कैसे जोड़ा सर सिस्टम कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क वो ऑटोमेटिकली इसको लर्न करते हैं। नहीं सर तो एक इमेज जो मैंने पहले एक इमेज दिया सर, वही एक इमेज को रीड करेगा मॉडल। सर एंड में मैंने ये दिया हुआ है कि फॉर एग्जांपल जो एक्सरसाइज अब ये आप मॉनिटर पर परफॉर्म कर रहे हैं, मैंने सिर्फ उसको नाम दिया, हाँ ये आप ये एक्सरसाइज अभी आपने परफॉर्म किया। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने किया डार्सिफ्लेक्शन ऑफ फूड, तो मैंने सिंपल लेबल किया डार्सिफ्लेक्शन ऑफ फूड वो मुझे शो करेगा। करेक्ट एंड का ये मुझे नहीं बताएगा क्योंकि मैंने उसको एक वैल्यू दी है, बस ये डार्सिफ्लेक्शन ऑफ फूड आपने परफॉर्म किया। मैं दूसरा परफॉर्म कर रहा हूँ एल्बो जॉइंट, ये एक्सरसाइज है, ये इस तरह मतलब मैंने कोई करेक्ट वर्ड इस तरह कुछ नहीं किया, सिंपल जो एक्सरसाइज है वही। हाँ ये ठीक है, बस ये ठीक है। मतलब जब मोमेंट आपने यहाँ तक पहुँच गया आपका मोमेंट, बस आप ठीक है। इसके दरम्यान में अगर इंटरमीडिएट मोमेंट है तो वो रिकग्नाइज नहीं करें। मैंने सिर्फ लास्ट वैल्यू डाली हुई है सर, लास्ट वैल्यू की इमेजेस डाली जो भी। हाँ बिल्कुल यस सर। सर जो क्वेश्चन आपने रेज किए तो मतलब आप इसको भी फ्यूचर वर्क में डाल। यस सर मतलब यहाँ पर जो वैलिड क्वेश्चन है और वो मतलब यस सर कि फ्यूचर में कोई और बंदा है। यस सर बिल्कुल सर। लेकिन वही है जो कैलकुलेशन है वो ट्रेनिंग है कि यहाँ पर मेरा ख्याल है कि जिससे मैंने इस समझो को रन करा तो इट टुक मोर देन 3 आवर्स। यस सर। जस्ट टू ट्रेन द सिस्टम ट्रेन तो हो जाए तो सही है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपको इतने सारे और विजिट करेंगे तो यू रिक्वायर a high performance cluster or a high performance computer to store the data and then to manage. Yes sir. वो तो ट्रेंड मॉडल आप दे दोगे ना? नहीं सर मैंने समझा, मैंने तो सुना ही।
एक्सरसाइज मैं करूँ मेरा पैशन। यस सर। हाँ तो मैं अपने कंप्यूटर के ऊपर इसको चलाऊंगा तो 2 मिनट में वो रन होगा, फिर कबाड़ा हो जाएगा सर कहता है। तो मुझे कोई आसान तरीका नहीं है कि मैं फ़ौरन स्टार्ट हो जाऊँ, मुझे फ़ौरन बता देगा मुझे कि आप एक्सरसाइज। सर अभी ये असल में इस फील्ड में ये तो मैंने ह्यूमन एक्टिविटी रिकग्निशन से ये आइडिया लिया हुआ है ना। ह्यूमन एक्टिविटी रिकग्निशन के मोस्टली पेपर्स अगर आप देखें तो उसमें ये है कि सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग अप स्टेयर, डाउन स्टेयर, लाइक दिस टाइप ऑफ मूवमेंट्स दे आर डिटेक्टिंग। सो मैंने उसी से आइडिया लेके कि सिटिंग अप एंड टेकिंग सिगरेट और नॉट सिगरेट, दिस मोस्टली पेपर्स आर ओवर दिस टाइप ऑफ पेपर्स। सो मैंने यही आइडिया लिया कि इसकी बजाय अगर हम एक्सरसाइज के लिए ये करें और इसको फिर एडवांस पे ले जाए तो ये बिल्कुल इनिशियल फेज है, इस पर बहुत कम पेपर है सर। यस सर। इसके बाद ये 2 घंटे लेकर एक क्लासिफिकेशन में करेंगे। ये सर जब मॉडल ट्रेन हुआ सर तो फिर तो बात ख़त्म है। एक बार जब ट्रेन हो जाए तो बस आपने मतलब वो ट्रेन एल्गोरिथम को देना है, उसको रिवीजन देने और ट्रेन मॉडल आप दो दोगे ना एग्जीक्यूटिव फॉर्म में, तो उसके बाद सारा डाटा पड़ा हुआ है, डाटा से पड़ा हुआ हाँ है, तो बाद में ट्रेन हो चुका है। यस सर। लेकिन अभी तक सर वीडियोस पे मैंने नहीं किया हुआ है ना, जो सर कह रहा है तो अभी उस तरह ये इनपुट नहीं लेगा क्योंकि वीडियोस के लिए मैं ये किया ही नहीं है। पेशेंट बॉडी पर डिपेंडेंट है, पेशेंट की बॉडी टाइप में स्ट्रक्चर है। यस सर। हाँ तो वो इसमें बात इन्वॉल्वमेंट है। नहीं सर वो तो मैंने बस फॉर एग्जांपल नॉर्मल जो सर यहाँ पे मैंने वो तस्वीरें नहीं लिया, तस्वीरें उधर थीसिस में है और जो मैं डिफरेंट टाइप ऑफ। हाँ बिल्कुल। अगर आपने 30 ईयर के स्टूडेंट बनने के लिए आपने ये किया है, हाँ एक बंदा है वो जो है अब 10 ईयर्स का है, हाँ ठीक है, तो अब 10 ईयर्स का उसके साइज में और इसके साइज में तो फर्क है। सर मैंने इसके लिए मैंने इसको डिफरेंट टाइप ऑफ तस्वीर दी। मैंने 5 साल से लेकर मेरी बेटी की तस्वीर है 5 साल, मैंने उसकी भी ली है और मेरा भाई जो है उसकी एज 28 है उसकी भी ली है, मैंने अपने बड़े भाई से भी ली है। तो इससे 5 साल से लेकर तकरीबन 40 साल तक की डिफरेंट तस्वीरें मैंने इसमें डाली है, सेम तस्वीरें, सिर्फ मतलब मॉडल को रोबस्ट बनाने के लिए ताकि उसको डिफरेंट टाइप हो। मॉडल ट्रेन हो गया, अब उसको मैंने डिप्लॉय कर दिया। मैंने अपने कमरे में 2 कैमरे लगाने हैं। 2 कैमरे सर आप लगाएंगे तो वो 2 कैमरे से 2 तस्वीरें आएंगी, 2 कैमरे से 2 तस्वीरें आएंगी। हाँ 2 तस्वीरें तो आपके मॉडल में दोनों कैसे मिलेंगे? सर तो प्रैक्टिकली अभी तो मैंने नहीं कि आप मतलब आपने 2 तस्वीरें तो 2 तस्वीरें उसमें आ जाएंगी ना। नहीं सर ये टाइम में वीडियो की बात है। रियल टाइम छोड़ दो यार, बस एक तस्वीर है, बस एक इधर से पकड़ी एक इधर से पकड़ के उसको दे दी, सिर्फ 2 पिक्चर चलेगी ना, सिर्फ 2 पिक्चर आ गई। हाँ बिल्कुल। अब उसके साथ क्या हो? अब फिर और उसको मॉडल को हम आप दें उसको आरजीबी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये वो उसके बाद क्या होगा? वो फिर वही दोबारा सर मॉडल को कैसे देखेंगे? इनपुट आपकी सर जो मैं हाँ वही ये तो एक ही नहीं हो। यस आपको दूसरी कैसे करेंगे? सर वो भी वो करें सर लूप पर दूसरी लूप डाल दें। ये तो सोचो एक एक्सरसाइज के अंदर सब हम सीक्वेंशियल भी दे रहे हैं। सर इसको हम सिचुएशन देंगे जाहिर बात है सीक्वेंशियल भी दे रहे हैं। सर इंटरनल वो चेंज हो जाता है सर वो इसमें जो इशू आता है वो ये देखते हैं कि फ्रंट से आपका एंगल सही है, तो वो फ्रंट से आपके इसको सर्कुलेट करेगा। दूसरा जो है आपके लेफ्ट राइट से, अगर आपके फ्रंट से आपके एंगल पे इशू है या लेफ्ट राइट से, यस सर तो वो बता देगा कि ये सर्कुलेट करेगा या ये रिप्लेस आप देखिए इसमें जो आप ले रहे हैं एक्सक्यूज मी सर आप दोनों इमेजेस को भी ठीक है उनको चाहिए अकट्ठे कुछ करके प्लॉट इसमें आप एंगल डिफरेंट है ना। आपका जो फ्रंट से अगर आप इसको वो करें और इधर से आप करें तो ठीक है, एवोल्यूशन मॉडल तो अपने बॉडी के मुताबिक उसको रिलेट कर देगा, ठीक है, लेकिन ये इनपुट इन दोनों इमेजेस को देगा मॉडल। ये दोनों इमेजेस उसको मिलनी चाहिए। ये कह रहे हैं कि ये इमेज मिलेगी कैसे? सर दोनों कैसे दोनों कैसे मिलेगी?
डिफरेंट इमेजेस की क्लास है, वो सर इस क्लास के साथ कंपेयर करेगा। सर LSTM में फिर आगे ये सीरीज में जाते हैं। फिर आप सीरीज में होंगे, हाँ। लेकिन जब मॉडल को प्रोवाइड होंगी तो वो जो है अपने इंटरनल जो प्रोसेस अप्लाई करेगा, हाँ। तो आपका जो सीन है वो अपना अप्लाई करके दोनों इमेजेस के साथ इमेज को कंपेयर करेगा। यस यस सर। पैरेलल कंप्यूटिंग का आपने नहीं है सर, पैरेलल कंप्यूटिंग इसमें है ही। ठीक है सर। ये सर 2 इमेज दे रहे हैं। अब ये इसमें थोड़ा सा नहीं यस सर, कैमरे यस हाँ। तो रिप्लेस करेंगे सर कैमरा रिप्लेस करेंगे सर। अभी इतना मुझे इतना इसके इंटरनल का वो पता नहीं है क्या अभी उसमें। आप इसको लिख देना, मतलब अपने फ्यूचर वर्क में। यस सर, ये फ्यूचर वर्क में हम ये डालेंगे। यस सर, यस सर मैंने तो 2 सर असल में ये कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क जो है ये आइडेंटिफाई कर लेता है, ये जब इस ये मैनेज कर लेता है। एक इमेज 2 दफ़ा, ठीक है, तो 2 दफ़ा वही बताएगा कि ये सर अगर मॉडल सही तरह ट्रेन हुआ तो जाहिर बात है वो 2 दफ़ा ही बताएगा। तो फिर ये बिल्कुल 2 दफ़ा सर तो इमेज सेम हो। यस सर। और आपने फ्रंट से 2 तस्वीरें लेकर सिस्टम को दी, हाँ तो क्या आपको ये मॉडल रिजल्ट सही देगा या गलत देगा? सर मैंने उसने सही किया है, एक्सरसाइज में लेकिन उसने सिर्फ फ्रंट से 2 तस्वीरें दे दी, आपको जो राइट साइड है उससे तस्वीर नहीं दी। यस तो अब ये मॉडल जो है, ठीक है, ये क्या बताएगा कि ये जो रिजल्ट या एक्सरसाइज है ये सही है कि गलत है? फिर इस केस में सर वो गलत बताएगा, फिर तो कुछ और, क्योंकि कैमरे 2 नहीं है। सर एक आप मतलब जो क्या नाम है उसका डायरेक्ट जो सेंस है कि वो डेप्थ को भी 3D होगा तो वो फिर नहीं हो सकेगा। तो इस वजह से मतलब यह है कि अगर आप दोनों तरह की वो जाएंगे तो तब वो आपको सही पोजीशन और एंगल आपको बता देगा, अदरवाइज फिर ठीक है सर। 3 लेयर CNN एल्गोरिथम। जाओ रिजल्ट्स में चले जाओ। ठीक सर, these are different parameters which we have seen. This is results and discussion. Convolution layer 1, which we have selected these number of features. Okay sir, for example in the first layer I have used 64 number of filters for the purpose to reduce the complexity of the model, learn reduced features, prevent overfitting, a kernel size of 5 cross. Yes sir. Sir, what? नहीं सर, वो हम सिंपल कमांड देते हैं 64 फिल्टर, वो ऑटोमेटिकली मॉडल जनरेट करते हैं। सर तो अभी हम तो मैनुअली सब प्रोग्राम नहीं करते, इसी वजह से तो हम CNN यूज़ कर रहे हैं। CNN ये खुद करता है सर। इसके बीच में हमने हाई लेवल APIs जो है वो इंस्टॉल की हुई है, वो तो 1000 लाइन ऑफ कोडिंग जो है वो 50 लाइन में कर देता है ना।
इसमें मैंने किरास लाइब्रेरी यूज़ की है, दूसरा नमपाई यूज़ की है, साइकिटलाइन यूज़ 4-5 लाइब्रेरी यूज़ की है, ज़्यादा नहीं है, जो कि एमएच से रिलेटेड है, एमएच और कंप्यूटेशन से रिलेटेड लाइब्रेरी है। फिर हमने ये जो परफॉर्मेंस जो है परफॉर्मेंस ये हमने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के थ्रू फाइंड की हुई है, शो की हुई है। कन्फ्यूजन जो मैट्रिक्स जो है इसमें ग्राउंड ट्रूथ वैल्यूज जो एक्चुअल वैल्यूज वो शो करता है एक साइड पे, और दूसरे पे जो है वो प्रिडिक्टेड वैल्यूज शो करता है। फॉर एग्जांपल प्रिडिक्टेड क्लास इज ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव एंड ट्रू नेगेटिव। दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रू पॉजिटिव व्हेन द ओके सर। Then this is the I have showed this table the values. For example, if I change the hyperparameters, then the model performance varies. For example, in the first I have used a batch normalization size of 192, and in the second I use a batch size of 32. So the first model performance is low, and the first it has reduced performance, and the other one its performance increased though. Just I have showed that during training the model, when we are changing the hyperparameters, the performance of the model varies. जी सर ये प्रिसीजन रिकॉल इसके लिए तो फार्मूला है, जिस तरह जो शुरू में वाले टेबल में इसमें ये मैंने बताया ना, ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, ट्रू नेगेटिव। तो ये प्रिसीजन जो है सर, प्रिसीजन जो है ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। सर ये जो हमने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के थ्रू ये फॉल्स पॉजिटिव सर वो यस सर ये सर वैल्यूज तो मैं नहीं लिखा, तो मॉडल ने कैलकुलेट करके आखिर में मुझे मैंने टेबल के पास में शो किया हुआ है, जो कि F1 स्कोर का सारा प्रिसीजन का है ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। F1 स्कोर का है ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाय ना F1 स्कोर का है सर 2 into रिकॉल प्लस प्रिसीजन डिवाइड बाय 2 into रिकॉल। Sir, I have mentioned it in the thesis, but in the slides I have not mentioned it here. I have it on myself in the paper also. सर तो सर मैंने तो याद भी की हुई है ना, मुझे याद है कि ये डिसीजन का ये है। और लास्ट में सर ये मॉडल जो है ये क्लासिफिकेशन रिपोर्ट ऑफ द 3 लेयर CNN LSTM मॉडल है, जो जब हमने ये वाले हाइपर पैरामीटर्स यूज़ किए जो मैंने इस टेबल में बताए हैं, मैंने ये हाइपर पैरामीटर जब यूज़ करके तो मॉडल की एक्यूरेसी जो है वो इंक्रीज़ हो गई है ये वाला। इसमें फिर मैंने ये 3 लेयर CNN LSTM मॉडल के थ्रू भी शो की हुई है और सिंपल CNN मॉडल की भी थ्रू शो की है। ये एक साइड पे 3 लेयर CNN LSTM मॉडल की रिजल्ट है, दूसरी साइड पे सिंपल CNN मॉडल की। थ्री लेयर CNN LSTM मॉडल टॉप पे, ये CNN सिंपल CNN के साथ मैंने कंपेयर किया है। हाँ बिल्कुल CNN जो मॉडल है सर हर एक इसमें कुछ के लिए हुई है कुछ के लिए नहीं। इस हाँ यस सर बिल्कुल बास के लिए सर हो लेकिन ओवरऑल यस सर बिल्कुल बास के लिए सर मैंने ये मेंशन भी किया है कि हमारा जो मॉडल है वो कम से कम एग्जिस्टिंग जो मॉडल है उसके साथ सिमिलर है या उससे इम्प्रूव हो गई है। सर ये फिर इसका वो मैंने सर में ये मैंने इधर शो किया हुआ है 3 लेयर CNN LSTM जो इसकी ओवरऑल फिर मैंने वो किया तो 3 लेयर CNN LSTM मॉडल इसकी 92% एक्यूरेसी थी, जो आवर CNN के थ्रू यस सर ओवरऑल 92% और CNN की 90% सर थी। कौन से नंबर सर क्लियर हो
Yes, sir. प्रैक्टिकली वो मॉडल खराब है तो ओरिजिनल इमेज कर आप वो करने बोलते भी और Yes, let's start here. So the conclusion of my research work is that I have used CNN and LSTM. Both are separately. Both of them are working fine. For example, LSTM is working for temporal data, and CNN is working spatial data. But I have combined both of them to take advantages of it. So the three-layer CNN LSTM might combine the power of merging of both CNN and LSTM model. Second, we are extracting and classifying activity features automatically. Our model is doing activity features automatically. Third one, that it handles the problem of occlusion, viewpoint variation, and deformation because the deep learning algorithm is doing because of this automatical feature extraction. Our model is having at least similar accuracy or better than existing approaches. And the last, the model is evaluated on our self-created data set, which is itself, I think it is also a research that we have created our own data sets having rehabilitation exercises. My future work is that I will train this model on more complex data set. I will prepare some in future, sir. but don't do what I do. Okay. Before this other one can do it. Yes, sir, sir. Is published and it has been written and cited by another subject also. Yes, sir. So what you say, I will. Okay. But this is the future one. The future one, yes, sir. Also, the model will be updated in such a way that we can use it in home or a rehabilitation center to carry out prescribed rehabilitation exercises without in-person supervision of physiotherapist. Thank you, sir. These are the references which I have given in the presentation. Thank you, sir.